वेलकम हेलो हेलो एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। कटिया में आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द स्केचर पार्ट ऑफ कटिया। अभी अभी कटिया में स्केचर और बेंच को कैसे एक्सेस करें, तो यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे, फिर मैकेनिकल डिज़ाइन एंड पार्ट डिज़ाइन। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे इनेबल हाइब्रिड डिज़ाइन यानी कि एक ही वर्क बेंच को हम दूसरे वर्क बेंच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको टिक करके रखते हैं। ठीक है, इसको ओके करेंगे। फिर ये जो ओपन होता है इसको कहते हैं पार्ट डिज़ाइन का वर्क बेंच। अब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन ट्री में एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ऐसे ये तीनों प्लेन यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे स्केचिंग, ये जो टूल बार है ये होता है स्केचर। इसको अगर ड्रैग और ड्रॉप करेंगे लेफ्ट क्लिक करके, तो स्केचर में हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। फर्स्ट होता है स्केच, दूसरा होता है पोजीशन स्केच। पोजीशन स्केच हम बाद में देखेंगे। स्केच में जाएंगे और फिर एक प्लेन सिलेक्ट करेंगे और वो स्केचर ओपन हो गया। अभी स्केचर वर्क बेंच में हमारे पास तीन टूल बार होते हैं: प्रोफाइल, कंस्ट्रेंट एंड ऑपरेशंस। ठीक है, प्रोफाइल मतलब हम प्रोफाइल जो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज़र सिलेक्शन फिल्टर्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन में पॉइंट सिलेक्ट करना हो, कर्व फिल्टर, ऐसे सब फिल्टर्स होते हैं। फिर यहाँ पे ये इन नेविगेटर टूल बार है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा एक होता है स्केच टूल्स। स्केच टूल्स टूल बार में हम जो स्केच करते हैं उसके यहाँ पे एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें यहाँ पे पता चलते हैं। तो अभी हम एक बेसिक स्केच करेंगे। तो सबसे पहले मैनिपुलेशन, अभी मैनिपुलेशन करना है हमें। पैन अगर करना हो तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, देखिए पैन। पैन पे सिलेक्ट किया, अब यहाँ से हम इसको पैन कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक करके। उसके बाद आता है रोटेट, अभी इसको हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल व्यू, यानी कि स्केच का जो प्लेन हम कर रहे हैं वो नॉर्मल व्यू पे। फिर उसके बाद फिट टू स्क्रीन। ओके, अभी यहाँ पे प्रोफाइल अगर हमें ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले आती है प्रोफाइल, यानी कि फर्स्ट पॉइंट। देन वी कैन स्पेसिफाई फ्रॉम हियर। द स्केच टूल बार से भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, एंगल, सब स्पेसिफाई यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, एक रैंडम, जब तक ये एंड पॉइंट को यहाँ पे मैच नहीं हो जाती तब तक ये लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गई, इसे कहते हैं प्रोफाइल लाइन। नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगल। इसमें हमारे पास दो टाइप्स, इसमें हमारे पास टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है रेक्टेंगल, यानी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड द सेकेंड कॉर्नर पॉइंट। ओके, देन थ्री पॉइंट रेक्टेंगल, we have first point, second point and its height or its width. Okay, then we have a parallelogram. Okay, so basically अगर आपको पैन करना हो तो आप स्क्रॉल व्हील, माउस का जो मिडल वाला स्क्रॉल व्हील है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेललोग्राम देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड इट्स विड्थ, ये होता है पैरेललोग्राम। उसके बाद आता है स्लॉट, एलोंगेटेड होल। एलोंगेटेड होल में जाएंगे, अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, देन उसका रेडियस, और ठीक है, फिर से एक बार करेंगे। दिस इज द एक्सिस ऑफ द होल, एलोंगेटेड होल, एंड द रेडियस, इट्स रेडियस। ठीक है, उसके बाद आता है सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड होल। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर पॉइंट, फिर एक्सिस, सिलेंडर सर्कुलर एक्सिस, और फर्स्ट उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, और फिर उसका रेडियस हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब ये तो स्केचर, हमने स्केच ड्रॉ किए हैं। अब ये अलग अलग हमने प्रोफाइल्स ड्रॉ किए, जैसे कि अभी की होल प्रोफाइल, कटिया में हमारे पास की होल प्रोफाइल होती है, और उसके लिए फर्स्ट पॉइंट, देन द एक्सिस ऑफ द की होल प्रोफाइल, एंड देन दिस radius. We can change the radius from here also. Okay, see this, we can change it. नेक्स्ट हमारे पास होता है पॉलीगॉन, हेक्सागोन।
See this first point and the radius. Okay, we can change from here also. Okay, as you can see, these are the different types of profiles. We have a center point rectangle also, in which we will draw a center point and automatically a, or also we can give height from here also, 30 tab. Okay, and width, let's give it 25. Okay, this is the rectangle we have made. Okay, so these are the various types of predefined profiles which we can access from here. Okay, we will clear the screen. Next is, we will see, let's put this to normal view. Next we will see the center point circle. We will give a center point and the radius. We can also define from the sketchbook toolbar. Okay, in the circle we have various types, like we have seen a center point circle, then we have a 3 point circle. If we have a 3 point, the circle will pass from that 3 points. See this? Okay, next is circle using coordinates. We can give coordinates to define a circle, like let's give 50 tab 50 x and y coordinates, or h, height and v, horizontal and vertical coordinates. We click OK, and this is the circle that I had made from this point 50 and 50. Okay, next is tan circle, tritangent circle. Okay, so we will draw 3 lines, first, second and third. Okay, so tritangent circle में जाएंगे, first line, then second line and third line. It will automatically draw a circle which perfectly fits tangent to the 3 lines. Okay, then 3 point arc is similar to 3 point circle. 3 points में से arc पास होता है. ठीक है, we can also give radius from here. ओके, और सेंटर पॉइंट यहाँ से ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है with limits. We will draw 3 points. Okay, and this is the limit. Then I have we have center point, start point and end point. ठीक है, this is the arc. We will define center point, start point and end point. Okay, now as you have seen, हमने सर्कल के सारे कमांड्स यहाँ पे देख लिए. इसको हम क्लियर करेंगे. अब ये सर्कल कमांड हम कहाँ से एक्सेस करते हैं? यहाँ से. ओके, उसके बाद हमारे पास है स्प्लाइन. स्प्लाइन में हमारे पास 2 ऑप्शन है. स्प्लाइन, फर्स्ट पॉइंट्स में से पास होने वाली स्प्लाइन. ओके, नेक्स्ट वी हैव, if we have a spline, 2 spline. Okay, we can connect both the spline, first spline, second spline and enter. This will join the 2 spline. Okay, we will see again. We go to connect spline, first spline, select second spline, and it will connect tangentially. See this, there is a tangent constant applied to the splines. Okay, so these is are the splines. We will clear the screen. Next is ellipse. Okay, ellipse में जाएंगे, वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट एंड we will give a major radius, then we will give a minor radius. You can also define this from here. Okay, next we have a okay, next are the conic profiles. Ellipse also a conic profile. We will clear the screen. Next we have a parabola bifocus. So we all know how a parabola look like. Okay, in parabola we have to define a focus. See,
We can also define it from here. The affix we can define and vertical points. Okay, and we can make a start point and then the end point. Clear? Next command we have is a hyperbola, bifocus, parabola, and then hyperbola. We will define a center point. Series, there is a focus here, and same we can define a x-ray. Okay, this is parabola series. So these are the various types of profile you can draw using. Okay, so next we have lines. We can draw various lines. Go to line, we select the first point and the second point. The command automatically turns off because it will be lines joined by 2 points, not a profile we can draw using many times until it's a boundary, it's a join. ठीक है, उसके बाद आता है इन्फिनिट लेंथ की लाइन। ये देखिए सिर्फ एक पॉइंट से हम इन्फिनिट लेंथ में एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बाई टेंजेंट लाइन। इसके लिए हमें चाहिए 2 आर्क। ओके, 2 आर्क हम यहाँ से क्रिएट करेंगे एंड नाउ वी कैन ड्रॉ अ लाइन विच इज टेंजेंट टू बोथ द आर्क। सी दिस, अंडरस्टैंड, दिस इज द लाइन। तो ऐसे वेरियस प्रोफाइल्स हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि बाइसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइन्स होंगे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो 2 लाइन्स को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बाइसेक्टिंग लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ हो जाएंगी। सी दिस, अ बाइसेक्टिंग लाइन इज ड्रॉन टू इन्फिनिट लेंथ। उसके बाद हमारे पास है नॉर्मल टू कर्व। वी कैन सी यूजिंग, वी विल क्रिएट अ आर्क एंड नाउ इट कैन draw a curve series normal to, you can see it is a normal to the curve and passes through the center point. See this? So these are the various options of lines. What we have next is the axis. We can draw a axis. See this? This is the axis. This will not affect the permanent geometry of the. Next options we have are the points. We can draw points like see this. Next is the points using coordinates, equidistance points. Let's see, we have a points. See this, हमें सिर्फ ये लाइन सेलेक्ट करनी है, कितने पॉइंट्स चाहिए वो सिलेक्ट करने हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे अलोंग द लेंथ ऑफ द लाइन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, ये देखिए इक्वली डिस्टेंस हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर 2 कर्व होंगे तो उनका जो इंटरसेक्शन क्रिएट होगा वहाँ पे वो पॉइंट क्रिएट करेगा। ये देखिए first line, second line, it has created a point at the intersection. So you can see we have this type of profiles. So in Sketcher we have completed the profiles. So let's we will next move to the constraints. How constraints are useful when we are drawing the, if we draw a profile, see this, what happens जब हम इस प्रोफाइल को मूव करते हैं तो ये मूव होता है। ठीक है, तो अगर हमने इस प्रोफाइल के रेफरेंस में अगर कुछ क्रिएट किया, सी दिस, अगर हमने इस प्रोफाइल के, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को मूव करूँगा तो नेक्स्ट ये जो प्रोफाइल है ये भी मूव होगी। तो अगर हमें इसे कंस्ट्रेंट करना हो किसी रेफरेंस से तो हम कमांड यूज़ करते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट अगर हम बेसिकली देखे जाए तो डिमेंशंस इसको हम देते हैं। ठीक है, इसको कंस्ट्रेंट क्या दे सकते हैं, रेडियस और डायमीटर की। उसके बाद इस लाइन को हम लेंथ की दे सकते हैं। और कंस्ट्रेंट देने के लिए हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट में जाना है। उसके बाद अगर हमें ये पॉइंट को इस वाली एक्सिस से अगर कंस्ट्रेंट देना है तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सी दिस हॉरिजॉन्टल। इफ़ यू वांट टू गिव अनदर, अगर दूसरा सा कंस्ट्रेंट देना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे और कोइंसिडेंस करेंगे। तो देखिए ये कोइंसाइड हो गया है इस एक्सिस से।
ठीक है, कंस्ट्रेंट में आपको कुछ डाउट है, आप अलग प्रोफाइल को कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। ठीक है, मल्टी कंस्ट्रेंट, अगर ये मल्टी कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, तो ये सब कंस्ट्रेंट हम क्या कर सकते हैं, एडिट मल्टी कंस्ट्रेंट में आप एक ही जगह पे ये सब मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस। स्केचर्स में हम ऑपरेशंस भी देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है सीरीज, तो इस रेक्टेंगल में क्या है, शार्प कॉर्नर्स है, इसको नॉर्मल व्यू करेंगे। ठीक है, अभी शार्प कॉर्नर से तो हम क्या करते हैं, ये जो शार्प कॉर्नर से इसको क्या करते हैं, फिलेट देते हैं या फिर कॉर्नर देते हैं। कॉर्नर देने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट एज सेकेंड एज और फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, see this, and we can give a radius from here, we can give a radius, or if we click here the constraint automatically appears. We can give from here also radius of 300. Okay, next is we have chamfer. See this, so chamfer same just like fillet, हम यहाँ पे chamfer दे सकते हैं। ठीक है, इसका हम यहाँ से एंगल और ये जो लेंथ है ये चेंज कर सकते हैं। जस्ट वी हैव टू डबल क्लिक ऑन इट। ओके, so just like that we have completed the operations, these two operations. Next operation we have is a, we can see, first we have draw random lines just to understand the how the toolbar we have is trim. So trim, what is trim, if we have a line and there is a intersection between those line and we have a point, so what is do, it will delete the excess amount of line. See this, just have to click on it. Okay, it has deleted, so this line we can trim to this point, up to this point. See this. Okay, next command we have in the trim, we have multi commands. See this, re-eliminations. Okay, we have seen trim, there is a break, we can break the command. See this, so it has break or split into two parts at this point. Okay, next we have quick trim, we can quickly trim this part. See this, we have break, so it has trimmed from this side. Okay, close arc, if we have a what you can say, arc. See this, it is open arc. Okay, so we can close it from here. See this, we can close it. Okay, it has been closed. Next one is complement. Just we have seen a complement. What is a complement? If this is the arc and we click on complement, another side of the it will be shown. Okay, next we have a mirror command. In the mirror command, or what you can say, a transformation, we will see the transformations now. Clear the screen. So what are the transformations? See this, let's make a axis. Okay, if we have a profile, okay, and what we have to do, we have to mirror it along an axis. So this is the axis. Okay, so what we will do, we will click on mirror command और फिर हम क्या करेंगे, मिरर कमांड में क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कंट्रोल प्रेस करेंगे, सेकेंड। ओके, मिरर कमांड में जाएंगे, वी विल सिलेक्ट द प्रोफाइल and the axis, it will mirror the whole profile along that axis. Next we have symmetry. Just like that, we will go to symmetry, select the object, and then it will move, it will, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसलेट। सो व्हाट इज द ट्रांसलेशन? See this, select, we will give the base point and it will translate. We can also translate from here. Okay, we can also give a
instances. See this? These are the instances. If we increase, the instances increases. See this? Okay. This is the translation commands. Next is the rotate command. We will go to rotate command. Then we will select the object. Then its center point, and it will next we will give a radius. So we will give this radius, and it will rotate the object. So if we increase, it will increase the quantities. Okay, इंस्टेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं. उसके बाद हमारे पास है स्केल. तो अगर हमें स्केल करना है, अगर ये जो है इसको स्केल करना है हमें, ठीक है, उसका बेस पॉइंट हम करेंगे, उसका बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है. सी दिस वी कैन स्केल इट नाउ. सो वैल्यू अगर हम इसको सिर्फ 2 ही रख दें तो वो क्या होगा, डबल से स्केल होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है. दिस वाज द इनिशियल ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट ऑफसेट. Offset command is very similar series. Offset, we will go to the offset command, select the profile, and we will give the distance. We can also give it from here. Okay, so we will give 200, enter. See this, the offset has been created. So these are the various tabs we use in Sketcher to create the various sketches. So we have completed the 2D sketcher in CATIA. So thank you guys.